Okay. So as you know that today this is a free webinar which is interview success masterclass. Okay, and this is the first one of the first webinars that I'm conducting on this platform. This is a demo. This is one of the webinar systems. I used to conduct all the webinars and everything on Zoom or Google Meet, right? And most of you are my students only. Okay, so I'll be like most of you are Marathi only. So for you, I'll be talking in English as well as in Marathi as well. Okay, for understanding purpose. Okay, is that good? Is it okay? Marathi मध्ये is it okay if I speak in Marathi as well? You can type in yes in comment box. Okay, okay, thank you. Great. Okay, so I'm having one presentation where I have told you actually, right? You will be learning 6 steps to be highly confident to crack any interview. Okay, and this is what we are going to learn today. And as I've said in the message as well, at the end of the webinar, I'm going to introduce you to a proven system, which can help you to crack any interview to get that best paying and fulfilling job in your dream company. Okay, so just be there till the webinar end of the seminar, end of the webinar. I understand there can be a lot of challenges for you, but I think online platformसाठी सगळे आता used to आहेत. For last I think 2.5 years we have been doing. Okay, Bhavika, not an issue. I'll do both. You know, I'll speak in English. English is okay, Bhavika, right? English is okay. So what I'll do, I'll speak in Hindi. I think that would be Hindi Rashtra Bhasha. So I'll speak in Hindi. Okay, English and Hindi. Okay, that would be okay, right? Okay, I'll speak in Hindi and English. Okay, so just let me share the presentation. Just a second. Huh? We'll start with the presentation, and then we'll see if you are having any doubts. Just let me know. See, there are some rules for online, webinars or online lectures, as you must be knowing. If you are having any problem or any query, you can save it. You can write it down, and at the end of the presentation, you can ask me. Okay, or in case if you think you need the answer immediately, right, and that time only, because I'll also be asking you, are you getting it or not? Are you getting it or not? So at that time, you can comment. You can tell it to me in the comment box. Okay, I hope I'm clear. I'll be just sharing the presentation. Just give me a second. Just let me know if you can see the presentation. Can you see the presentation, guys? Okay, great. You can see the presentation, right? Okay, just let me go. Okay, so we'll start with the presentation. This is masterclass, which is interview success masterclass. Okay, presented by me, of course. I'm Professor Amol Marathi. Most of you already know me. I'm the founder and CEO of Super Success Career Hub. Okay, this is a community that I have started to help my students to crack any interview. Okay, for basically, this is a career success coaching. This is Super Success Solutions. Here it is. This is the logo. This is my company, which I've started, and this is my logo, right? And this is my motto as well. I want to help my students to succeed in their career. Okay, this is me, who don't know me. Okay, so I'll just brief my profile. Most of you must be knowing me. Bhavika, I think I'm not sure you know me or not. So I'm a marketing professional with 15 years of experience in education and printing, cabling and data center industry. Okay, just a second. Okay, so no, I have got expertise in marketing, corporate training, channel management, national and international key account management. Okay, I'll just brief about my profile so that you can understand what background I'm having. Okay, I'm highly successful in building relationships with high, upper level decision makers. I have been globally trained
by Fortune 500 companies in India like Xerox India Limited, Schneider Electric, Legrand India Limited, Solar Technologies in 10 years of, rather 11 years of my corporate career. Okay. Experience in conducting, training session on pan India level for our company sales force and company's national and regional partners. I'm Xerox certified sales coach. Xerox is the company, is a Fortune 500 company. Okay. I've been certified in global trainings like Xerox sales training in Croatia, Eastern Europe, Miller Hyman strategic selling program. It was in Singapore, spin selling workshop in Mumbai. Legrand India is a company where I used to work as a product specialist. That was a marketing profile. So Legrand consultative selling workshop. It was in Mumbai and in Nasik as well. And I have been appointed as a mentor for Xerox sales training, which we launched. Actually, we launched one business in India, and I acted as a mentor for that particular business. Okay, just a second. There are a lot of notifications that are coming. Just let me, just give me a second, guys. Okay. So basically, by qualification, I'm a production engineer. I'm MBA in marketing and finance from Pune Institute of MBA, Pune University. And as of now, I'm doing my PhD in marketing. So I have also worked as a professor of marketing in Navjit Institute of Management in Nasik. Other profiles included I was head of Startup and Innovation Cell, NAC, which is National Assessment Accreditation Council. I was coordinator, NAC coordinator, training and placement officer, social media coordinator, alumni coordinator, etc., etc. Okay, I've also worked on the projects of our Nigerian Education Society. Okay, yes. So I'll be brief, but you know, so as of now, I also offer corporate training, sales training, personal coaching and professional speaking, personal development, self success training, interview success training, right? And most of you might not be knowing this. I'm a practitioner of Jeet Kune Do, which is called JKD. It's a mixed martial arts, and this is developed by Bruce Lee for civilians. So I'm trained in that as well. Most of you might not be knowing because I usually, keep my calm and everything because that's what this JKD or mixed martial arts teaches you. Okay, and let me tell you, JKD Jeet Kune Do has got a philosophy that be simple, be direct, be effective, and that is what my agenda or my motive throughout my professional personal life as well. I'll always be simple, direct, and effective. Okay, so that's the principle of JKD. Yeah, this is one of the banners that I've created. Super Success Solutions, as I've told you. This is the certificate that I've received from Xerox, certified sales coach. This was in 2016 when I was working with Xerox India Limited. So you can reach me. This is the website that I have got, www.amolmarathi.com. Okay, and this is connect@amolmarathi.com. This is the mail. You can share your views or you can connect with me. Most of you might also be having my mobile number as well. Okay, so you can connect me directly, not an issue. So this is my LinkedIn profile. We will be looking at this profile as well. And now I have created this book series. Okay, I have published one book which is called Super Success Sanjeevani. This is an Amazon. I have published this ebook on Amazon. I think last year. This is specifically this is a practical guide to always get a better paying and fulfilling job. Okay, this is nine. I think 99 pages book. Okay, this is a very simple book. You can see there are 17 ratings as well, 4.5 stars. Okay, so this is a very book. This is a guide basically for you to succeed in your corporate career. Okay, so in a nutshell, I believe in simplification. Okay, simplification is the key. There is a great power in simplification, as I always say. As I've said, JKD, they are having this principle, Jeet Kundo. Okay, be always simple, be direct, be effective. So you can say I'm the agent of simplification, right? And always believe in leading by example. So whenever I will say, I have written this book called Super Success Sanjeevani. This is basically to crack any interview or grow you in your career. Today also I have arranged this master class of interview success, right? This is very specific.
how to be successful in any interview, any job interview. So why I'm telling you this, because why I'm eligible for this, because in my career of around 15, more than 15 years of career now, I have given more than 100 interviews. So I have learned a lot. And when I was researching for my book, मैं जब ये रिसर्च कर रहा था मेरे बुक के लिए, सुपर सक्सेस संजीवनी, I have done a lot of research. I have read a lot of books. I actually that is my hobby as well. I read, reading is my hobby. Usually I read self help or self development books. So I've read a lot of books even for my this work, the Super Success Sanjeevani ebook. I have referred a lot of books. So I have already researched on this particular career development concept, you would say. So that is why I'm saying I'm leading by example. I should be eligible to teach to you. So I have already gone through it, and so that is why I'm eligible now. I'm credible enough to teach it to you. Okay, these are previous seminars. This was HK College of Pharmacy in Mumbai. We got recognized in Pharma Times. This was in Nasik. SNGB is one of the colleges in Chandwad, so this was in Lokmat. Okay, this is one of the webinars. This is one of the platforms, online platforms where personal development, basic and advanced courses I have recorded. Okay. So now, I have become a digital coach now, and as I've said, I have I have got more than 15 years of career experience now in corporate and academics, and I'm on a mission, as this states, to help 1 lakh working professionals in next 3 years to crack any interview to get the best paying and fulfilling job in your dream company. Okay, this is my mission. I want to help 1 lakh working professionals in next 3 years for what? To crack any interview to get the best paying job and fulfilling job in their dream company. This is my mission. Okay, so I have left my job. I was working with one of the institutes, as I've said, to focus on my this mission. I have left my job, and for last 3 4 months I have been working on this digital system that I've created. So one sincere request to all of you. I know you must up you must be working in some industry, in some company. You must be having 0 to 5 years, 10 years, 15, 20 years of experience. So one request is be open minded. you know be open minded for this seminar. Just try to understand whatever I'm trying to tell you. I'm not saying मुझे सब आता है. I'm not saying that. I'm an MBA, बट आई डोंट से मुझे बहुत आता है. एमबीए का वो भी फुल फॉर्म है. मुझे बहुत आता है. एमबीए मुझे बहुत आता है. राइट. आई डोंट से दैट. राइट. आई एम अ कंटिन्यूस लर्नर. Whenever I'm teaching you, I'm also learning. Right. Teaching is the best way of learning, as they say. Right. So be open minded. We have to learn, unlearn and relearn lot of things. हमको कई सारी चीजें पहले सीखनी पड़ती है. सारी चीजें हम गलत तरीके से सीखते हैं, तो वो अनलर्न करनी पड़ती है एंड रीलर्न करना पड़ता है फिर, जो व्हाट वी लर्न करेक्टली. राइट. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, बी लाइक अ स्पंज. स्पंज पता है आपको? व्हाट स्पंज डज. इफ यू पोर द वाटर ऑन स्पंज, वो क्या करता है? गीला हो जाता है, और फिर हमको जब यूज करना है, व्हाट वी डू इज वी स्क्वीज इट आउट. है ना, स्क्वीज करते हैं उसको, जितना पानी चाहिए उतना रखते हैं, बाकी निकाल देते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, यू आर गोइंग टू डू हियर. वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, that's a water, right? That's a water in the bucket. So you are going to dip the sponge. जितना चाहिए उतना रखना है, बाद में जितना नहीं चाहिए वो निकाल देना है. सिंपल एज दैट, है ना? राइट. So this is my sincere request. So let's start. This is the core message of our masterclass. 6 steps to be highly confident to crack any job interview. Okay. Obviously, as I've said, this is really very important for any kind of job. Whatever job interview you are preparing for, this is really very important. And this is actually the situation. You can see here, this is the picture, right? हम खुद को इतना छोटा बना लेते हैं जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं. वी कंसिडर हमको कुछ भी नहीं आता है, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं हम उनको बहुत बड़ा बना देते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है ना. सो दिस इज द सिचुएशन लॉट ऑफ टाइम्स. ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? जस्ट सेकंड. या. इज इट ओके? एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रहा है सबको? पत्नी has said I'm not audible. Okay, okay, क्लियर है ना? आवाज आ रहा है सबको? You can see the presentation, right? Okay. Thank you so much, Rahul. Thank you, Vaibhav. Padmini, I think you have to, see for the connection, internet connection.
इवन आप अगर जगह भी चेंज करें ना तो कनेक्टिविटी आ जाती है बहुत बार. ओके. ओके, I'll focus on the presentation then. Okay. uh, just for the management purpose, आपके जो doubts है, जो भी doubts रहेंगे, please note them down, because what is happening is I can see the presentation, at the same time I can't see your comment. Okay, so every time I have to go back to comment box. So what you can do is आपके जो questions है ना, वो लिख के रखिए. At the end of the session we'll discuss about it. Okay, chalo, let's move ahead. One note is there that there are some do's and don'ts, some of the do's and don'ts based on my own experience of appearing, as I've said, appearing for more than 100 interviews. मैंने 100 से ज़्यादा interviews दिए. मेरे जो 15 years of career, मेरा छोटा सा career है, I have done engineering, then MBA, and then 15 years of career. So I have given more than 100 interviews, so which will help you to be highly confident in any job interview. Okay. And एक मुझे और note बतानी है. You might have seen, you might see that presentation is in the form of, थोड़ा सा मैंने explain किया हुआ है. यूजुअली मेरे जो प्रेजेंटेशंस रहते हैं वो पॉइंटर्स रहता है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने क्यों ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, बिकॉज दिस प्रेजेंट ये जो प्रेजेंटेशन है 6 स्टेप्स टू बी हाईली कॉन्फिडेंट इन योर जॉब इंटरव्यू. सो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. Don't worry, at the end of the session I'll be sharing this PDF copy of this presentation with you, so don't worry. Screenshots लेना है तो लीजिए आप. Don't worry about it. I'll be sharing the entire presentation with you, जो मैंने जहाँ से शुरू किया है, not my profile, but जहाँ से हमने वो 6 steps का presentation शुरू किया है, वहाँ से entire presentation you will be getting, so don't worry about it. Okay, PDF copy आपको मिल जाएगी. So आपको बाद में वो refer करने के लिए मैंने ये detail में explain किया हुआ है. Okay, that's not my style actually to run through the presentation. I usually have the pointers and I explain those pointers. Okay, लेकिन ये आपको बाद में रेफर करने के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है. So first of all, first step is the most important step is dress code. जैसे मैंने दिखा हुआ, dress code is really very important, and there are a lot of studies that have been done, और उसमें बताया हुआ है कि 70% of the people are getting rejected because वो ठीक से ड्रेस करके नहीं आए थे इंटरव्यूज के लिए. Okay, 70%, more than 70% of the people are getting rejected because they were not in proper dress code. Okay, so we'll see what is the dress code, what should be the dress code for any interview. So first of all, obviously formals. आप जीन्स एंड टी शर्ट में यूजुअली जाते नहीं है, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना भी नहीं चाहिए. So formal, preferably white shirt and black or dark gray trouser, I would say, for gents, and formal dress for ladies. Usually avoid jeans and everything. In jeans t-shirt avoid करना है दोनों के लिए, gents and ladies के लिए. As I've and there are a lot of trousers and tops are available nowadays for ladies as well. For their corporate use, right? For office purpose के लिए. So this is the best combination for appearing for the interviews. White shirt and black or dark gray trouser. Even every time whenever I used to go for the interview, यही combination रहता था. Okay, they must be properly washed and ironed. बहुत important है, because that shows that you are serious about that interview. आपका seriousness दिखता है. आप अगर ऐसे ही शर्ट आयन नहीं है, वॉश नहीं प्रॉपरली, ऐसे खराब दिख रहा है, वैसे ही गए, कॉलर खराब है, वैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यूअर्स का तो काम ही है नोटिस करना छोटी छोटी चीजें. फ्रॉम दैट छोटी छोटी चीजें दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर. ओके, आपकी पर्सनैलिटी वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो ऑलवेज बी प्रॉपर अटायर. The students, I have got many students who have joined today, so they know me. I'm always in a proper wash and iron clothes and never be shabby. Okay, I've seen people coming to interviews in a very shabby way. Shabby way मतलब वही है कि जैसे मैंने बताया कि iron नहीं है, wash नहीं properly, that gives a bad impression, guys. Well and formals will definitely help you create that first impression to start your interview on a positive note. First impression is the last impression, है ना, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, first impression last impression है. So most of the times may not be last impression, but at least वो आपको एक help करता है. सामने वाला तुरंत आपको जज करना शुरू कर देता है. There is a study done, 7 seconds में, 7 seconds, first 7 seconds are really very important. आप जब से अंदर आते हैं, बैठते हैं, उस 7 seconds में इंटरव्यूअर आपको मे बी 50-70% जज कर लेता है. ओके, सो दैट इज वाई दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ड्रेस कोड अगेन, टाई. ओके,
tie is really very important, for any interview. A lot of professionals prefer wearing a decent tie and formals for interview. In case of ladies, even if you don't wear tie, that is absolutely okay. But in case of gents, tie is must. Tie is a must. Okay, it really creates an added impression on the interviewer. Okay, it also helps to feel better about ourselves. और टाई भी कैसा होना चाहिए कि जो जो मैच हो रहा हो, शर्ट अलग ही है और वो पैंट अलग ही है, टाई का कलर ही अलग अलग है, इट डजंट मैटर. सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. आई यूज्ड टू हैव रेड टाई इज आल्सो ओके. बहुत भड़क नहीं है वो. रेड टाई इज आल्सो ओके. व्हाइट शर्ट, रेड टाई, और ब्लू टाई फॉर दैट मैटर इज एब्सोल्युटली ओके. And blazer, जैसे मैं I usually wear blazer as well when going for any interview with senior professionals. See, when you are applying for a higher position, maybe regional head, or maybe whatever it may be, country head or whatever it may be, right, business head. तो उस वक्त वो आपकी पर्सनालिटी उस टाइप की होनी चाहिए. एज आई सेड, पीपल आर कंटिन्यूसली जजिंग यू. सो दैट इज व्हाई ब्लेजर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर मीटिंग सीनियर प्रोफेशनल्स. इवन आप अगर छोटे जॉब, ये छोटे, आई वुड नॉट से छोटा मोटा जॉब नहीं रहता है, लेकिन अगर आप किसी एंट्री लेवल जॉब के लिए आप जा रहे हो और आपकी मीटिंग सीनियर पर्सन के साथ है किसी, सो एट दैट टाइम यू शुड वेयर ब्लेजर. Okay, it gives me added confidence, self confidence, as I think of myself as an important person. जब आप ब्लेजर वेयर करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, दिस इज अ ब्लेजर, एंड यू नो आई यूजुअली वेयर ऑल द टाइम. ब्लेजर, आई यूजुअली वेयर ब्लेजर ऑल द टाइम. स्टूडेंट्स नो मी, राइट. मुझे बोलना पड़ता है, अरे भाई ब्लेजर निकाल के रखो अभी, राइट. सो बिकॉज दैट गिव्स मी एडेड कॉन्फिडेंस. आई थिंक दैट आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, राइट. सो सामने वाले ने आपको इम्पोर्टेंट पर्सन समझने से पहले आपको खुद को इम्पोर्टेंट पर्सन समझना जरूरी होता है. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, दिस strengthens my mindset for better discussion and negotiation with employers. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्या होता है, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग होता है इसकी वजह से. आई फील आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, सो आई नीड अ बेटर रेस. सो मुझे 20% नहीं चाहिए, मुझे 30% चाहिए, बिकॉज आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो निगोसिएशन जब होता है, डिस्कशन जब होता है, एट दैट टाइम दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, योर आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है निगोसिएशन के बाद. ऑब्वियसली, है ना, कॉम्ड हेयर. हमने देखा है कई बार गर्ल्स कैसे भी जाते हैं. इवन आपका इंटरव्यू जब है, फर्स्ट गो टू द वॉशरूम, जस्ट आपके हेयर जो है ठीक से सेट कर लो, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओ. दिस इज अ प्रोटोकॉल, गाइस. Guys and girls, I hope I don't have to emphasize on the importance of combed hair. Again, related to your self confidence, self worth, and what you consider of yourself. Okay, are you understanding? Okay, so before going ahead, I'll just see. Okay, so it's okay, guys. Are you understanding? Clear? है? First point is clear, guys. Rahul, Vaibhav, Prashant, Padmini, Kirti, yeah, Tejas, Bhavika. Okay, great, great. Chalo, I'll move to the presentation then again. हाँ, second one is non-verbal communication. क्या होता है non-verbal communication? See, there is verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication मतलब क्या होता है, जो आप बोलते हैं, actual में बात कर रहे हैं जो, है ना, like I'm talking to you now, right? This is verbal communication. There are verbs, है ना. Non-verbal communication मतलब क्या होता है, जो body language बोलता है ना. आप जैसे देखते हो किसी की तरफ, जो आप नोट करते हो, this is called non-verbal communication. Make an eye contact. So this has got a psychological impact on interviewers as well as you look confident and look like you are telling the truth. So always make an eye contact. हम इधर उधर देखते रहते हैं, यूजुअली जब हम झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में कुछ, तो हम इधर उधर, हाँ सर, हाँ मैंने वो भी किया है, मैंने ये कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है, वो कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है, मैंने इतने साल वहाँ काम किया हुआ है. आपने 1 साल काम किया हुआ रहता है, आप 2 साल बताते हो कई बार. आई एम नॉट सेइंग यू डू दैट, बट लॉट ऑफ पीपल डू दैट. ओके, कि नहीं सर, मैंने वहाँ 2 साल काम किया हुआ है, काम किया हुआ था 6 महीने ही, लेकिन बताते 2 साल. सो और जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं ना, वो उसमें ट्रेंड रहते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, उनको पता होता है कि आप जब झूठ बोल रहे हो. And nowadays there are a lot of companies which do background checks.
आपके बैकग्राउंड चेक्स भी होते हैं, और मैंने देखा मेरी कंपनी से कई बार आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो, आफ्टर डूइंग बैकग्राउंड चेक, उनको समझ में आया कि अरे कुछ उसमें गड़बड़ है, यू नो, तो उसके बाद भी लोगों को निकाला हुआ है. सो दैट इज वाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ. देयर इज वन हैक, यू नो. So always look into the left eye of the person you are talking to, personally or professionally. See, there is a psychological. This is a psychology, human psychology. I have read it, you know, lot of times. That always look in the left eye. You know, left eye is left eye, right? The two eyes, left eye. Okay, why? Because uh, as I've said, there is a psychological impact, and usually हमारे जो right eye, left eye होता है, even if a righty or lefty doesn't matter, but left eye is submissive, as I've, I can tell you, थोड़ा submissive होता है. तो किसी भी person के आप जब left eye में देखते हैं, तो he is ready to accept, you know. वो एक साइकोलॉजी है. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग. देयर इज अ हैक. ऑलवेज लुक इनटू द लेफ्ट आई ऑफ द पर्सन. आपके दोस्त हो, आपके घर वाले हो, आपके बॉस हो, कलीग हो, डजंट मैटर, इंटरव्यूअर्स हो, डजंट मैटर. ऑलवेज लुक इन द लेफ्ट आई ऑफ द पर्सन, है ना. और एट अ टाइम हम एक ही आंख में देख सकते हैं. आपको पता है हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं. सो ऑलवेज लुक इन द वन आई, लेफ्ट आई. ओके. हैंड जेस्चर्स, यू कैन सी हियर, राइट. व्हाट्सअप, व्हाट्स टुडे. सो ऐसा नहीं करना है हमको इंटरव्यूज के साथ. लेकिन हैंड जेस्चर्स, लाइक while you are explaining something, like जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ना, while you are explaining something to interviewers, that throws an impression at the interviewers that you understand the concept and you can explain it in detail. समझ रहे हैं आपको. जब आप ऐसे हैंड जेस्चर्स करते हैं ना, सर नहीं मुझे ये कंसेप्ट पता है, इफ यू टॉक अबाउट सिक्स सिग्मा, जो भी नए कंसेप्ट, मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, ये वो, सो जब आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट गिव्स एन इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर कि आपको वो पता है कंसेप्ट. ओके. इवन नोडिंग. सो नोडिंग आपको पता होगा, आई एम नॉट श्योर. दिस इज नोडिंग, दिस इज कॉल्ड नोडिंग. हाँ, ओके. आप बात कर रहे हैं मुझसे, तो अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड, है ना. ये जो हम ऐसे करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं रादर, इसको बोलते हैं नोडिंग, है ना. सो इवन नोडिंग, दैट इज लोअरिंग एंड रेजिंग वंस हेड स्लाइटली एंड ब्रीफ. ऐसे जोर जोर से नहीं करना. हाँ अच्छा, है ना, वो फेक लगेगा, है ना. सो अच्छा, जस्ट जेंटली, राइट. Especially in greeting or understanding, or to give someone a signal when you are listening to the interviewers, sends a positive signal that you are a good listener. See, you need to be a good listener in your interview as well. आपको इंटरव्यू में क्या लगता है, सिर्फ बातें करनी है. अरे भाई मुझे एक बार छोड़ दो, मैं आधे घंटा जो भी है इंटरव्यू में, जो भी है मुझे आता है सब एक बार बोल के बाहर निकलना है मुझे. दैट इज व्हाट वी थिंक यूजुअली. आई यूज्ड टू थिंक दैट 15 years बैक. बराबर. लेकिन मुझे कहीं कई सारे मेंटर्स मिले, उन्होंने बताया कि अरे अमूल ऐसा नहीं होता है. इवन इन द इंटरव्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द इंटरव्यूअर्स. वो क्या बोल रहे हैं तब. यू शुड बी अ गुड लिसनर. वो कुछ बता रहे तो उसमें से काफी हिंट्स मिलती है. इंटरव्यूअर्स भी एचआर वाला पर्सन रहता है कई बार, आपका फ्यूचर बॉस वहां हो सकता है, मे बी बिजनेस हेड, कंट्री हेड हो सकता है. एट वेन एवर दे आर सेइंग, डोंट इंटरप्ट देम, है ना. उनका खत्म होने के बाद बोलिए. लेकिन जब भी वो बात कर रहे हैं, सो एक्नॉलेज, नोड, अच्छा, ओके, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विथ मी, है ना. ओके, सो ऑलवेज नोड, राइट. नोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड जेस्चर्स and dress for success. This is also non-verbal communication, not like this. ये फर्स्ट इंटरव्यू में यूजुअली ऐसे होता है. आजकल थोड़ा सा, यू आर जनरेशन जेड, राइट, जनरेशन जी एज द से. सो इसमें ऐसे नहीं जाना है हमको. ओके. हमको जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एज वी डिस्कस्ड अबाउट इन द ड्रेस कोड, हमने डिस्कस किया है ना, फॉर्मल्स कैसे करना है. फॉर्मल्स में जाना है व्हाइट शर्ट, ब्लैक और डार्क ग्रे ट्राउजर, वैसे हमको जाना है, बिकॉज यू मस्ट लुक लाइक अ विनर टू द इंटरव्यूअर, है ना. एंड एज दे से, ड्रेस लाइक यू ओन द बैंक, नॉट लाइक यू नीड अ लोन फ्रॉम इट. जब भी बैंक में भी लोन जाते हैं ना लेने, जैसे विजय माल्या सर जाते होंगे कि अरे भाई मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मुझे लोन चाहिए. भले लोन मांगने जाते होंगे, लेकिन फिर भी बड़ा आदमी बन के जाते हैं. See, हमको पता है बाद में क्या हुआ. आई एम नॉट, मैं वो एनकरेज नहीं कर रहा हूँ आपको. लेकिन whenever you are going for the interview, consider yourself as an important person. Just beggar की तरह नहीं जाना है. I have seen lot of people, नहीं सर ये जॉब चाहिए चाहिए, कैसे भी तो जाते हैं, तभी ऐसे शोल्डर्स डाउन रहते हैं, ऐसे एकदम, सर दे दो जॉब. ऐसे नहीं करना है. ओके. ड्रेस लाइक यू ओन द बैंक. ड्रेस हमारा प्रॉपर होना चाहिए और एटीट्यूड भी प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है सर,
you know this your company is very good company, it's a great company rather. I want to work with you, I want to work with you, I want to work with your company. लेकिन भाई मेरा भी एक, आई एम ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पर्सन, आई हैव डन, जो भी है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया होगा, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया होगा, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, सो दैट मेक्स यू एन इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना? सो ऑलवेज वो लेवल जो होती है ना, जैसे मैंने पहला पिक्चर देखा था, हमने हम एकदम छोटा बन जाता है, इंटरव्यूअर्स को बड़ा बना देते हैं, वैसा नहीं करना है। वी आर एट द सेम लेवल, ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एट द सेम लेवल एज इंटरव्यूअर्स। ओके, हाँ, हमने उनको रिस्पेक्ट देना है, ओके, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है उनका, लेकिन खुद को इतना कम भी नहीं समझना है। ओके, सो दैट इज वाई ड्रेस लाइक यू ओन द बैंक, not like you need a loan from it. Okay, so now we'll come to the third step, which is communication. One of the most important things, speak slowly and clearly, है ना? मैं भी जैसे कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना? सो मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि स्लोली मैं थोड़ा बात करूँ और क्लियरली बात करूँ, राइट? सो टेक द पॉजेस इफ यू नीड while answering the questions in an interview, बट स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। मतलब ठीक से बात करनी है, एकदम एबीसीडी के जैसे ए से शुरू हो गए, जेड पे जाके रुके, वैसे नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना? सामने आप सामने सामने इंटरव्यू होता है, यूजुअली आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन उसमें भी वीडियो ऑन रहता है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड आपके रिएक्शंस कैसे है, आपके जेस्चर्स, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और आपको भी क्या करना है, आपको भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है ना? और आपको जो आप बातें करना चाहते हैं, वो उनको समझना चाहिए ना। इफ यू आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, इफ यू आर हैविंग गुड वर्क एक्सपीरियंस, आपने, इफ यू आर अ परफॉर्मर, उनको वो बात समझनी तो चाहिए। सो दैट इज व्हाई क्लियरली स्पीक, क्लियरली एंड स्पीक स्लोली। ओके, usually we are in a great hurry to finish off the interview and leave the place as soon as possible due to pressure. हम प्रेशर में रहते हैं ना, बहुत प्रेशर रहता है, अरे भाई एक बार इंटरव्यू खत्म हो जाए, मैं निकलता हूँ यहाँ से, है ना? बाद में जाके थोड़ा सा घर पे सो सुबह से मैं कल रात से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक बार इंटरव्यू हो जाए, है ना? क्योंकि अंडर प्रेशर, आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी गोज थ्रू दैट, दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडर प्रेशर रहता ही है। ओके, बट डोंट बी इन सच अ हरी, टेक योर टाइम. So please understand, you are required to reflect the confidence while talking, especially if you are being interviewed for a client facing job role, जॉब प्रोफाइल। क्लाइंट फेसिंग मतलब जरूरी नहीं कि सेल्स का ही हो, आपका मार्केटिंग का ही हो। कई सारे आजकल तो बैंकिंग में भी आपने देखा होगा, बैंकिंग में भी जो होता है कंपनी, दे आर ऑल द रोल्स आर जॉब, क्लाइंट फेसिंग, सबको क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। ओके, देर आर, कस्टमर फीडबैक जो लेते हैं, वो लोग, उनको भी क्लाइंट फेसिंग बोल सकते हैं, है ना? सो दैट इज वाई आपको जो बोलना है, आपकी जो चीजें कन्वे करनी है, वो क्लियरली होनी चाहिए और स्लोली होनी चाहिए। ओके, when communication continued, speak slowly, please remember that communication is root cause of everything, good as well as bad ones. communication अगर proper हुआ, good communication है, तो चीजें अच्छे से होंगी। और अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब प्रॉब्लम शुरू होती है ना? यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। सो टोन अप योर वॉइस। सो क्लियरली और डिस्टिंक्टली कैसे बात किया जाए, यू नीड टू हैव दैट डीप वॉइस, स्पीकिंग फ्रॉम योर डायफ्राम, ऐसे बोलते हैं। डायफ्राम मतलब क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एक ऐसे डायफ्राम होता है, जो जब आप सांस लेते हैं तब फूलता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तब वापस वैसे हो जाता है ना। आपने देखा होगा, जैसे छोटा बेबी, यू मस्ट हैव सीन द स्मॉल बेबी, राइट? वो क्या करता है स्मॉल बेबी? स्मॉल बेबी जब ब्रीद इन करता है, जब हवा अंदर लेता है, सांस अंदर लेता है, तो उसका पेट फूलता है ना? हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट फूलती है। दैट्स अ शैलो ब्रीथिंग, दैट इज कॉल्ड शैलो ब्रीथिंग। सो आपने मेडिटेशन, मोस्ट ऑफ यू माइट बी डूइंग मेडिटेशन एज वेल, तो उसमें क्या सिखाते हैं, वेन एवर यू आर ब्रीदिंग इन, पेट बाहर आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग फ्रॉम डायफ्राम। Okay, diaphragm, this one. So that will help you create a better impression in the job interview and in general life, in general tone up your voice. We are talking about deep voice, deep voice, है ना? तो जब हम डायफ्राम से बात करते हैं, जब हम वी आर स्पीकिंग फ्रॉम डायफ्राम, तो आपका वॉइस डीप होता है, जो क्लियरली और स्लोली आता है ना? सो ओपन योर माउथ एंड टेक 3-4 डीप ब्रेथ्स, like, and belly should inflate,
आपकी जो पेट है वो फूलना चाहिए when you breathe in, when you are breathing in. So this is one of the techniques, right? This is actually one of the techniques which a lot of people use. Before going for the interview, they do this activity. 3-4 बार ऐसे सांस लेते हैं अंदर डायफ्राम. दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग फ्रॉम डायफ्राम. और वो फिर आपको वो डीप वॉइस वाला फीलिंग देता है. सामने वाले को भी वो आपका वॉइस डीप आता है. Okay, so I hope I'm clear about this. You can use this technique in your next interview. Next one is step 4 is sitting posture. आपका जो sitting है, आप जैसे बैठते हो, तो वो बहुत important होता है ना? Like this one. So always sit up straight. Don't sit like you have all the burden in the world on your shoulders. Usually लोग ऐसे रहते हैं, है ना? कैसे बात करते हैं लोग? Just a second. कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, लोग ऐसे. So, ऐसे होना है हमेशा. Your straighten up your back. ओके, जब भी आप कहीं भी बैठ रहे हो. ओके, और एक चीज है जो आई होप मैंने आगे कंसिडर की होगी. आई टेल यू. जब भी आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, यूजुअली यू एंटर द हॉल, और एंटर द रूम. तो उस वक्त क्या होता है, आप पहले पूछते हो सर मैं कम इन, सर मैं कम इन मैम, है ना? जब आप ये चेयर के पास जाते हो ना, जस्ट डोंट सिट डायरेक्टली. वेट फॉर 2 or 3 seconds एंड लेट देम टेल यू टू सिट. They'll say, "Arey, please basa, please, arey, बैठिए, please sit down." You know, that is again a protocol for the interview. Please understand, guys. These are protocols. Okay, so don't sit directly. Wait for telling them to seat you. Okay, I hope I'm clear about it. Okay, sit up straight, but not relaxed. Remember, you are not an interviewer. एंड सो डोंट ले बैक. यूजुअल लोगों के ऐसे थोड़ा सा आराम से, अरे भाई आराम से इंटरव्यू देंगे, वैसा नहीं करना है. जस्ट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, इन अ अटेंटिव पोजीशन. सो प्लेस योर हैंड्स ऑन द हैंड रेस्ट और योर लैप. अगर हैंड रेस्ट है वहां, यहाँ नहीं है, देखिए इस, हैंड रेस्ट मतलब कि जहाँ हैंड रखते हैं, हम हाथ रखते हैं, वो नहीं होगा तो यू कैन कीप इट ऑन योर लैप. आप ऐसे नहीं करना है. डोंट फोल्ड योर हैंड्स. So this shows this, this is body language. In body language, this is called a closed position. In this position, it is said that you are not able to, so nobody can get through you. आप कुछ सुनने के पोजीशन में नहीं हो, है ना? This position shows that. So don't fold your hands, never. Okay. Usually, ladies can cross their legs and put their hands on the lap. You can cross their legs. Okay, ladies can cross their legs. Okay, so we are coming to the step 5. I'll just confirm once again if you are understand. Guys, everything is clear, है ना? समझ रहा है? समझता है? पुरानो? Okay. Thank you, Kirti. Thank you, Vaibhav. Okay. I hope and in case if you, thank you, Anu. So we'll move ahead. Step 5 is what? Sympathizing. What is sympathizing? We'll understand. Look at the person talking. Sympathizing मतलब क्या? अगर कोई बात कर रहा है, जैसे मैंने बोला, इंटरव्यूअर कुछ आपको बता रहा है, if he or she is explaining about your job profile, तो नोट कीजिए. Look at the person talking. आप यहाँ वहाँ नहीं देखना है, या जो पर्सन बात कर रहा है उसकी तरफ ही देखना है. यूजुअली हम क्या करते हैं, अंडर प्रेशर क्या होता है, हम इधर उधर देखते हैं, अच्छा अच्छा एक बार देखते हैं फिर इधर देखते हैं, बस नहीं करना है. यू हैव टू कंटिन्यूसली लुक एट द पर्सन, स्टेयर नहीं करना है, एकदम ऐसे डरा नहीं देना है पर्सन को, इंटरव्यूअर को. जस्ट लुक एट द पर्सन टॉकिंग. communication is an art, even when you are not talking. Please understand. So while you are just looking at the person, at the same time you are also communicating. That's also communication. आप क्या बता रहे हो कि वॉट एवर यू आर टेलिंग मी, यू हैव गॉट माई 100% अटेंशन, है ना? इंटरव्यू को वो बताना इम्पोर्टेंट है. एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर यू, बिकॉज इंटरव्यू को लग रहा है भाई हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन रहा है, ये बंदा है, बंदी सुन रही है ना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज आर्ट, वेन एवर, इवन वेन यू आर नॉट स्पीकिंग. So looking at the person who is talking, there may be more than one interviewer, है ना? Usually 2-3 लोग रहते ही है,
ऐसे यूजुअली कम होता है। यूजुअली सेकंड और थर्ड इंटरव्यू होता है जिसमें बिजनेस हेड वगैरह रहेगा, तो यूजुअली वो सिंगल पर्सन रहता है। लेकिन इनिशियली मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई हैव गिवन, दो तीन लोग तो रहते ही रहते हैं, है ना? So looking at the person who is talking emphasizes the fact that you are an attentive and good listener. Attentive person, good listener. Are you understanding? So good listening, जैसे हमने पहले भी देखा है, that is really very important. The person talking also feels like you are listening to him or her. This creates a psychological soft spot for you. है ना? जैसे मैंने बोला साइकोलॉजी। अच्छा, मैं जो यूजुअली लोगों को क्या होता है, देखो हम जब भी बात करते हैं हमको क्या लगता है, अरे लोग, मैं जो बोल रहा हूँ लोगों ने सुनना चाहिए, है ना? हम अपने दोस्तों के करीब क्यों रहते हैं, हम उनसे कोई बात करते हैं वो सुनते हैं हमारी बात, है ना? हमको वो अच्छा लगता है। दैट्स अ साइकोलॉजिकल सॉफ्ट स्पॉट दैट इज बीइंग गेटिंग क्रिएटेड फॉर आवर फ्रेंड्स, राइट? सो दैट इज वाई जब इंटरव्यूअर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और हम सुन रहे हैं, तो दैट अगेन क्रिएट्स अ सॉफ्ट स्पॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमको जो भी पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड में रहना है ना, वो इसमें से करना है। एक्ट लाइक यू केयर, है ना? मतलब क्या करना है इन द इंटरव्यू, इफ वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स is suggesting you something or even sharing any of the experiences with you, then act like you really understand his or her views on that topic. कई बार क्या होता है, सीनियर पर्सन रहता है इंटरव्यू में, और कई बार आपने कुछ आंसर दिया है तो उसको अगर पसंद आया नहीं आया डजेंट मैटर, लेकिन वो आपके उनके खुद के व्यूज आपसे शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नो आई हैव सीन इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज, आई हैव टेकन इंटरव्यूज, मेरे कलीग्स भी वैसे करते थे, क्योंकि उनको भी कहीं लगता है कि नहीं यार ये बंदे को जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, वो, है ना? दे शेयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो उसमें एटलीस्ट act like you care, मतलब अच्छा, at least nod, accept that, tell them that's real, thank you so much sir for sharing that experience with us. Right? So please understand, we are not here to argue on interviewer's opinion on that topic, and if your thinking is different, see आपकी thinking जो भी हो, please understand in that particular interview, ऑब्वियसली योर ओपिनियंस इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने आर्ग्यू नहीं करना है इंटरव्यूअर के साथ, बिकॉज वही बंदा है या बंदी है जो हमको जॉब देने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने आर्ग्यू नहीं करना, इवन इफ यू आर हैविंग डिफरेंट व्यू, टेल इट सॉफ्टली और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट डोंट आर्ग्यू इन द इंटरव्यू। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यूइंग इन द इंटरव्यू, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, ये मैंने किया ही हुआ है, मैंने ऐसा कैसे आप बोल रहे हो नहीं किया हुआ है, वट एवर इज योर ओपिनियन, सॉफ्टली, जैसे ना क्लियरली और सॉफ्टली बात करना, सिंपल एज दैट। We are there to grab that job opportunity, so focus on act like you care and understand, please understand, okay? उनको हमको कन्वे करना है that अरे आप जो भी बोल रहे हो ना सर सब सही है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, वेरी गुड सर, यू आर हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस, राइट? एंड इन द इंटरव्यू यही करते हैं इंटरव्यूज, वो कई बार उनका खुद का नॉलेज बताते हैं, हम जैसे जिसको ज्ञान बोलते हैं आजकल, है ना, अरे ज्ञान दे रहा था मुझे वो सब इंटरव्यू में, ऐसे बोलते हैं हम बहुत बार, राइट? अरे बहुत ज्ञान दे रहा था यार, मैंने तो 10 मिनट ही बोला, वो खुद ही 30 मिनट 30 मिनट्स बोल रहा था, है ना, बहुत ज्ञान दे रहा, राइट? सो लेकिन वो 30 मिनट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट पर्सन इज शेयरिंग समथिंग इंपॉर्टेंट विथ यू, है ना? सो प्लीज बी अटेंटिव and act like you care and understand. And the sixth step is documentation. Obviously, this is really very important for any interview. मैंने देखा हुआ है लोग कई सारे डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो लेके नहीं जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन अगेन, दिस इज वन ऑफ द, जब इंटरव्यू हो गया है खत्म, उन्होंने बोला कि भैया डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दो, पहले भी होता है कई बार, है ना? उस वक्त क्या होता है, 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू कैरी फॉर जॉब इंटरव्यू, मैं ऑलवेज कैरी करता था ये। कौन से करिकुलम, सीवी, रेज्यूमे और बायोडाटा, वट एवर यू कॉल इट, है ना? वो तो इम्पोर्टेंट ही है, भले ही आपने दिया हुआ है। मैं अभी भी जब एक विजिटिंग फैकल्टी के लिए मुझे बुलाया गया था, तो उस वक्त भी मैं गया था, मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी थी, मुझे पता था वो उसकी हार्ड कॉपी ले लेंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रिंट लेके गया था, 3 प्रिंट्स मैं लेके गया था अपने बायोडाटा या जो भी सीवी के, आई वाज कैरिंग इट। मैंने पूछा सर आपके पास है या मैं दूं, तो उनके पास था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं है, थैंक यू सो मच, आई गॉट इट। मैंने बोला सर मैंने भी लाए हुए इफ नहीं नहीं है मेरे पास, है ना? सो इट अगेन क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट शोज दैट यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, है ना? देन ऑफ कोर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। सो मैं यूजुअली क्या करता था, वो एक बड़ी फाइल कैरी करता था, उसमें सब डिटेल्स रहते थे,
सब मैं प्रॉपरली रखता था, सो दैट एंड टाइम पे वो क्या होता था कि इंटरव्यू के चक्कर में क्या होता है बहुत बार कि हम वो भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, अरे एसीवी रह गया, अरे वो सर्टिफिकेट रह गया, सैलरी स्लिप्स रह गए। तो इससे अच्छा एक हमने एक फोल्डर बना के रखना है जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन हो, राइट। तो सैलरी स्लिप्स यूजुअली फॉर लास्ट 3 मंथ्स एनी इंटरव्यू के लिए लगते ही है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, आपके पास जो प्रीवियस कंपनीज के होंगे। प्रमोशन लेटर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब बोल रहे हो, क्या होता है कि कई बार अगर लास्ट कंपनी के आपके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, उसमें क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल 10 लाख सैलरी है, उसके बाद आपका 2 बार प्रमोशन हो चुका है या इंक्रीमेंट हो चुका है, तो सैलरी में भी 12 लाख, वो उसमें नहीं दिखाई देगी अपॉइंटमेंट लेटर में। तो आपको इसलिए वो प्रमोशन लेटर्स कैरी करना है कि सर माई करंट सैलरी इज 12 लाख, है ना। So past employment and resignation letters, if you can carry letters of appreciation is really very important, because appreciation से क्या होता है, that shows that you are a very important employee for that particular company, that is why they are appreciating you, because you are doing a good job for them, है ना। इसलिए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस लेटर या रेफरेंसेस आजकल लोग मांगते हैं, यू नो, ऑलवेज कैरी इट विथ यू। यूजुअली आजकल के मैंने देखा हुआ है, कंपनीज के हर एक कंपनी के खुद के फॉर्म्स भी रहते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अमोल, अच्छा अमोल, गिव अस 3 रेफरेंसेस फ्रॉम द कॉर्पोरेट योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल आपके जो होंगे, दोस्त होंगे या कलीग्स होंगे, उनके 3 रेफरेंसेस चाहिए मुझे। सो मैं 3 रेफरेंसेस यूजुअली रेडी रखता था, मतलब क्या नाम है, for example Sachin Dandekar, he is working with this company, and उनका designation ये है, उनका ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी और पर्सनल ईमेल आईडी वॉट एवर इट मे बी, और फोन नंबर, ये 3-4 चीजें लगती ही लगती है। तो मैं क्या करता था, मैं अपने व्हाट्सएप में वो 3 लेके ही जाता था इमीडिएटली, फिर वो फॉर्म। नहीं तो क्या होता था, पहले मैंने 1-2 बार क्या किया था, हर बार अरे यार किसको फोन करूँ, अच्छा ये तीनों को, इसको करूँ उसको करूँ, फिर उसको करता था फोन, अरे यार तेरे डिटेल्स चाहिए, फिर वो मीटिंग में रहता था, वो बोलता है अरे मैं देता हूँ 15 मिनट में, फिर उस तब तक रुको, है ना। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपको ये सारी चीजें रेडी रखनी है ना। सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिकॉज कई सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स, वो कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं, अच्छा है ना, तो वो सर्टिफिकेट्स आपको जो मिलते हैं वो आपको करने हैं। एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, लॉट ऑफ कंपनीज आस्क फॉर इट, है ना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपका जो वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये सामने से आप दे रहे हो, दैट शोज दैट यू आर नॉट लाइंग एनीथिंग, राइट, यू आर नॉट लाइंग अबाउट एनीथिंग। ओके, सो आफ्टर ये सारी चीजें जब आप करते हो, ये स्टेप्स फॉलो करते हो, तो आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो, है ना, राइट। पप्पू पास हो गया, राइट। सो यू विल बी लाइक नंबर 1, because you will be highly confident after following these 6 steps, you will be highly confident to crack any interview,